Namaskar and welcome to this special program. And over the next half an hour, we'll be talking to our correspondents about the major stories that we are covering. And let's begin first with the BJP rally. The senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah addressed a rally via video link. And Amit Shah pointed out that the purpose of the rally was to pledge support for Aatmanirbhar Bharat. Let's listen. आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जंग के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये रैली कोई राजनीतिक दल के गुणगान गाने की रैली नहीं है। ये वर्चुअल रैली है देश की करोड़ों की जनता को कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर जोड़ने के लिए उनके हौसले बुलंद करने की रैली है। ये रैली है आत्मविश्वास से भरपूर, आत्मनिर्भर जगमगाता भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के आह्वान के साथ देश की जनता को जोड़ने की रैली है। Well, Amit Shah also said that the Modi government had taken care of migrant laborers of Bihar and that the opposition parties were only involved with politicizing this issue. जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी और उसको श्रमिक ट्रेन प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। The senior BJP leader used the analogy of a lantern to LED to define the development made in Bihar, with active assistance of the Modi government at the center. मैं सभी को कहना चाहता हूं, हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी। और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हो तो जरूर बताइएगा। And our correspondent Shailendra Mishra now joins us with an update on this story. Well, Shailendra, very clear, the Home Minister saying that this was really not about a campaign for Bihar elections. This was about COVID. It was about Aatmanirbhar Bharat. How important is that message? बिल्कुल, कई अहम संदेश इस वर्चुअल रैली से बीजेपी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता को और देश की जनता को दिया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से 130 करोड़ जनता को पूरी तरह से एकजुट कर जो कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं और किस तरह से आप देखें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में तमाम ऐतिहासिक फैसलों के जरिए आगे बढ़ा गया उपलब्धियों का खासतौर पर जिक्र अमित शाह ने किया और ये खासतौर पर बताया कि बिहार में अगर देखें तो कोरोना संकट के दौरान 5700 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे खातों में दी गई। तो एक तरफ विपक्ष पर निशाना की तंज भी कसा कि वो अब खाली पीट रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहल थी एक तरह से अब उसे मान रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सिलसिलेवार तरीके से उपलब्धियों को सामने रखा, किस तरह से मोदी सरकार ने काम किया है, खासतौर पर बिहार और पूर्वी भारत की जो हालात बदली है, श्रमिकों के योगदान का जिक्र किया कि उनका पसीना लगा हुआ है देश के विकास में, न्यू में। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि वर्चुअल रैली के जरिए दरअसल बीजेपी ने कई संदेश एक साथ दिए हैं कि किस तरह से राजनीतिक तौर पर संवाद किया जा सकता है, और साथ ही साथ एक हिसाब भी दिया है बिहार के पैकेज का जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था, और इसके साथ ही कोरोना संकट
के दौरान किस तरह से प्रभावी तरीके से मोदी सरकार निपट रही है, उसका भी जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया। जी मार्क। Right, but Shailendra, also with regard to the fight against corona, apart from what the government has done, Amit Shah also spoke about the opposition's politics on the issue, especially with regard to the migrant laborers, as well as with regard to the overall fight against COVID, saying that the opposition is largely politicizing this issue when actually the country needs to stand together. That's also an important message. बिल्कुल, उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं कि जिनके आह्वान पर 130 करोड़ जनता देश की एकजुट हुई है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, और विपक्ष ऐसे में एक तरह से तंज कस रहा है। और इस लड़ाई को लेकर विपक्ष ने क्या किया है, उसने क्या सहयोग किया है, वो बताया कि लाखों लोगों को, लाखों श्रमिकों को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया गया, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके भोजन की व्यवस्था की गई, क्वारंटाइन में सुविधा दी जा रही है। इस बात का खासतौर पर जिक्र और कहा कि विपक्ष बताए कि दरअसल उन्होंने क्या सहयोग किया है। तो ये अपने आप में एक तरह से बहुत एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है बीजेपी के आज के इस वर्चुअल रैली में बीजेपी की तरफ से, और गृह मंत्री अमित शाह ने इसका खासतौर पर जिक्र भी किया। तो एक तरह से विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि आप देखिए किस तरह से इतने बड़े संकट के दौरान मोदी सरकार प्रभावी तरीकों से निपट रही है। लाखों मजदूर, प्रवासी मजदूर जो अपने घर जाना चाहते थे, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया गया है, उनके भोजन पानी का इंतजाम किया गया है, लोगों के खातों में पैसे डाले जा रहे हैं, और ऐसे में विपक्ष से तंज कस रहा है। और इस बात का जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील थी, विपक्ष अब ताली बजा रहा था, तो से साथ में आ गया है। तो ये तंज भी कसा, तो निश्चित तौर पर ये एक संदेश भी है, मैसेज भी है विपक्षी दलों को कि आप भी सहयोग करिए। Right, and if we talk about the welfare measures, he did mention overall that, in the last 70 years, what could not be achieved has been achieved in the first year of the second Modi government. But specifically, I think he was speaking largely about cash transfers, ration, certain kind of welfare steps. Can you fill us in with the details? मार्क, दरअसल मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहले साल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने इस बात पर खास फोकस किया कि जो 70 साल में जो फैसले कोई छू नहीं सका था, जिन पर आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, चाहे वो 370 हो, 35 खत्म करने को हो जम्मू कश्मीर में, वो मोदी सरकार ने करके दिखाया है। 3 तलाक को खत्म किया है, सीए को लागू किया है। तो इस तरह के जो ऐतिहासिक और बोल्ड फैसले हैं वो एक साल के दौरान लिए गए हैं, जो कई दशकों से लंबित थे। राम मंदिर निर्माण का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद किस तरह से ट्रस्ट बनाकर उसका रास्ता साफ किया गया, और दूसरी ओर जो वेलफेयर मेजर्स उठाए गए हैं, जो तमाम राहत देने का काम किया गया कोरोना संकट के दौरान, चाहे वो खाद्यान्न देने का काम हो या फिर सीधे तौर पे खाते में पैसा देने का बात हो जिसका जिक्र किया, उसको विस्तार से गृह मंत्री ने गिनाया किस तरह से तमाम राहत देने का काम किया गया, और उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जिससे सीधे तौर पर जनता को फायदा हो रहा है। कहा कि 9.5 करोड़ किसानों में को 72,000 करोड़ रुपए की राशि सम्मान निधि में मिली है, जो हर साल एक तरह से मिलेगी। इस योजना का जिक्र किया, इसके साथ ही तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया जिससे सीधे तौर पर जनता को फायदा हो रहा है। दरअसल एक तरफ एक साल में उन बोल्ड और ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया, और मोदी सरकार किस तरह से प्रभावी तरीके से निपट रही है उसका भी विस्तार से कोरोना संकट के दौरान उसका भी जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने आज की वर्चुअल रैली में बिहार जनसंवाद के दौरान। जी, एंड अ फाइनल क्वेश्चन Shailendra, also about the growth rate of Bihar under the Nitish Kumar government. He did also compare it to the previous government before that, or actually the RJD, and he said that while it was only about 3% or 4% at that time, it is now 11.3%. So that is a huge significant jump. He also compared the lantern has now moved into the LED. So, you as a political observer, how do you view this? मार्क, हम जानते हैं कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव संभावित है, और भाषण के अंत में इसका खास तौर पर जिक्र भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया और कहा, उम्मीद जताई कि 2/3 बहुमत से एनडीए सरकार की वापसी होगी। नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की तारीफ भी की कि किस तरह से बिहार में वो कोरोना संकट के दौरान निपटने आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से बिहार को आगे ले जाने में वो जुटे हुए हैं, इसकी तारीफ भी की। और साथ ही साथ उन बातों का जिक्र किया कि कब
लालू राज के दौरान किस तरह से जो लालटेन राज था और अब एलईडी बिहार में आई है, और तमाम उन विकास योजनाओं का जिक्र किया, खासतौर पर उस पैकेज में को विस्तार से बताया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पैकेज का ऐलान किया था बिहार में और कैसे उस पैकेज को खर्च किया गया है उसका विस्तार से जिक्र किया। तो संदेश भी साफ है कि 2 बार बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में बिहार की जनता ने मदद की है। तो ऐसे में बिहार और पूरे पूर्वी भारत का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, इसका खास तौर पर जिक्र भी किया गया और बताया गया कि किस तरह से बिहार अब लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में आ गया है और उसका भी विशेष तौर पर जिक्र किया गया। जी मान Shailendra Mishra, thank you very much for your inputs. Let's move on to our next story then. Arvind Kejriwal, the AAP government in Delhi, has decided that only Delhi residents will be treated in government and private hospitals of Delhi government, although people of all states will be able to be treated in the central government hospitals. But several political parties have raised concerns about this decision of the AAP government, as it doesn't allow residents of the NCR, the satellite towns of Delhi, to use these hospitals, and they more or less live in Delhi, more or less that way. But the Delhi BJP chief Adesh Gupta has believes that the Kejriwal government, I beg your pardon, the Kejriwal government is taking such decisions to hide its failure, and that this decision is both insensitive and morally wrong. दिल्ली सरकार ने जो ये कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाहर के लोगों का इलाज नहीं करेंगे हम, वास्तव में दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें दिल्ली की जनता के लिए जो कोरोना की समस्या है उससे निपटना चाहिए, और जिस तरह से उन्होंने असंवेदनशीलता जाहिर की है, ये असंवेदनशीलता है कि आप कोई अस्पताल में आए, कोई बाहर का है, अंदर का है, सबका इलाज होना चाहिए। इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाकर दिल्ली सरकार मुद्दों को भटकाना चाहती है। But it was not only the BJP, it's also the Congress party that raised concerns about this decision of Arvind Kejriwal. The Congress leader Ajay Markan has said that the Kejriwal government is finding excuses for not treating patients in its hospitals. दिल्ली सरकार के खुद के 38 में से 33 हॉस्पिटल्स कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को वापस भेज रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं केवल 5 हॉस्पिटल्स जो कोरोना के लिए हैं उनको जो डेडिकेट किया गया वहीं आप जाइए। तो केजरीवाल साहब, दिल्ली तो खुलेगी या नहीं खुलेगी ये बात की बात है। सबसे पहले आप अपने हॉस्पिटल जो 38 हॉस्पिटल्स हैं उसको तो खोलिए कोरोना पेशेंट्स के लिए, फिर उसके बाद में बात की बात करें। दिल्ली जो हमारे यहां पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, 4,400 में से दिल्ली में मात्र 28% दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बेड ऑक्यूपाइड है। ये मैं सिर्फ दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूं। दिल्ली सरकार के 72%, 72% दिल्ली गवर्नमेंट के कोविड डेडिकेटेड 4,400 बेड में से 72% खाली हैं। Well, moving on to our next story, then states and union territories are gearing up to open religious places, malls, restaurants, hotels and offices from tomorrow. The Union Health and Family Welfare Minister had on the 4th of June issued standard operating procedures, SOPs. This is to open up these places. Now, as per the guidelines, generic measures need to be observed by all the staff, workers or patrons at all times when visiting malls, restaurants or workplaces. These include physical distancing of at least 6 feet and the use of face covers or masks. Respiratory etiquette is to be strictly followed. This involves strict practice of covering one's mouth and nose while coughing, sneezing with a tissue, handkerchief, flexed elbow and disposing of the used tissues properly. Self-monitoring of health by all and reporting any illness at the earliest to the state and district helpline. All restaurants have been asked to ensure that takeaways are encouraged instead of dine-ins, and all staff and patrons to be allowed entry only if using face covers or masks. Well, in case of religious places, the SOP advises that people above 65 years of age, pregnant women, children below the age of 10 years are to stay at home. Large gatherings and congregations continue to remain prohibited. And let's talk to some of our correspondents. And let's go back to our Delhi story, in fact, the Delhi hospital story. And we are joined by Nitendra, who is joining us, Nitendra Singh.
our correspondent who covers medical matters, is joining us. Well, Nitendra, a bit unfortunate then for people in the NCR region if the Delhi hospitals are only going to be for Delhi residents. निश्चित तौर पे मार्क ये जो दिल्ली सरकार का फैसला वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है जब इस तरह की महामारी है और जब पैंडेमिक सिचुएशन है दुनिया भर में, जब लोग एक साथ मिल करके इस बीमारी से लड़ रहे हैं, ऐसे में सिर्फ ये कह देना कि सिर्फ दिल्ली के जो लोग हैं, निवासी है, वही दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराएंगे, तो ये निश्चित तौर पे एक तरह से ये इस तरह की जो बीमारी महामारी में एक तरह से अच्छा नहीं माना जाएगा यह सरकार का फैसला। इनफैक्ट इस महामारी से बीमारी से लड़ने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, और सभी देश के नागरिक हैं, एक ही नागरिकता है। और दिल्ली एनसीआर में चूंकि मूवमेंट सबका होता है, कई लोग दिल्ली के एनसीआर के कई हिस्सों में रहते हैं, चाहे वो नोएडा में हो या फिर बाकी जगह पे हो या फिर गाजियाबाद में हो, वो दिल्ली आते हैं, वहां पे काम करते हैं, और जिस जगह पर भी अगर बेड अवेलेबल है वहां पे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बीमार हो, तो उसको इलाज से मना नहीं कर सकता कोई भी अस्पताल, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, क्योंकि सभी एक देश के नागरिक है, नागरिकता एक है। तो ऐसे में ये फैसला निश्चित तौर पे चौंकाने वाला है और ये एक बहुत ही गंभीर इशू है। जब ऐसी सिचुएशन में जब कोविड जैसे महामारी से हम लड़ रहे हैं, तो मिलकर लड़ने की जरूरत है। जहां भी बेड अवेलेबल है लोगों को, वहां पर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जी। Right. Also, Nitendra, with regard to the people, having access to doctors via telemedicine, via, to get the best advice at this time, because you did say, of course, it isn't like it is spreading fast, and people are kind of nervous. They're not sure. But asymptomatic patients are meant to stay at home, and so also there is observance that is being made. In fact, as per the guidelines, people who report any illness need to actually contact a doctor immediately. So how do they go about that under the circumstances if the situation is like this? निश्चित तौर पे जिस तरीके से लॉकडाउन भी अब धीरे धीरे खुल गया है और कल से 8 तारीख से तमाम जो मंदिर है और बाकी चीजें भी खुल रहे हैं, मॉल्स भी खुल रहे हैं, तो ऐसे में जो संक्रमण है वो फैलेगा। और ये डॉक्टरों का भी ये कहना है कि जब सब लोग मार्केट जाएंगे या फिर पब्लिक प्लेस पे जाएंगे, दफ्तर जाएंगे, तो स्प्रेड धीरे धीरे होगा। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। और माना गया है कि जो अब तक की स्टडी आई है आईसीएमआर की या फिर डॉक्टर जो जितने भी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, तो एसिम्टोमेटिक 80% पेशेंट है जिनको कोई लक्षण भी नहीं दिखता है या फिर कुछ मामूली लक्षण दिखता है, तो वो उनका घर पे भी इलाज हो सकता है और डॉक्टर के एडवाइस से भी वो फोन से टेलीमेडिसिन के जरिए भी एडवाइस ले सकते हैं और घर पे अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन 10 से 15% ऐसे मरीज हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल या फिर डेडिकेटेड कोविड सेंटर में उनके इलाज की जरूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। ऐसे में जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये दावा है कि 5 जून तक 9000 बेड तैयार हो जाएंगे, अगर 9000 बेड तैयार हैं उनके, तो फिर वो जो भी आदमी जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है, जिनको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, तो उसमें आपत्ति क्या है, चाहे वो कहीं के रहने वाले हों, कहीं से भी बिलोंग करते हो, अगर उनको बेड खाली है तो वो अस्पताल में उनको इलाज मिलना चाहिए। रहा सवाल कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घर पे रहने के ट्रीटमेंट की जरूरत है, एसिम्टोमेटिक है या मामूली लक्षण है, अगर वो घर पे रहेंगे तो उनका अगर जो प्रोटोकॉल है, दिशा निर्देश है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उसका अगर पालन करते हैं, हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं, मास्क लगा के रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो घर में भी वो 80% मरीज ठीक हो जाते हैं। जो सबसे अहम बात है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो पैंडेमिक सिचुएशन होती है, जब महामारी होती है, इसका एक प्रक्रिया होता है और जब ये पहले शुरुआत में विदेश से अगर केस आता है, फिर लोकल लेवल पे फैलता है, उसके बाद ये धीरे धीरे बाकी दूसरे लोगों में फैलता है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की भी एक फेज आती है। तो वो निश्चित तौर पे ये एक महामारी का, संक्रामक बीमारी का एक प्रक्रिया है, तो उसको वो पालन करना, वो अपनी एक जो साइकिल है उसको पूरा करता ही है। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। सरकार ने तकरीबन 1.5 लाख से अधिक डेडिकेटेड कोविड बेड की व्यवस्था की है, 9000 से ज्यादा
हॉस्पिटल की डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था देश भर में की गई है। Okay. और जो कोविड सेंटर है वो भी करीब करीब 2000 से अधिक Yes, देश भर में Nitendra. कोविड केयर सेंटर बनाया So, गया है। तो Nitendra, लोगों they're को telling us घबराने की very जरूरत नहीं है। clearly- Yes. लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। Absolutely. People have to be aware of their responsibilities, but the number of hospitals and beds in Delhi are sufficient, is what Nitendra telling us. Now, moving on to our next story, we are joined by Aisha Khanam from Bengaluru about the Unlock 1, and let's talk to Aisha about the latest developments. In fact, we have all of them. We have not only we have Aisha, we have Vishal and Shama also joining us with an update from all these places. Let's start with you, Aisha. So the situation is that religious places are going to open, malls, restaurants are also going to open. So what is it like? I mean, are people looking forward to going to these places, but they have to also be a little careful, isn't it? Yes, absolutely, Mark. People are looking forward to a new beginning from tomorrow. It will be a new dawn when the temples open, and people who have been waiting for a long to visit the religious places will go and perform their prayers. And of course, with the guidelines and social distancing norms, which all these religious places have been preparing for people to come. And the fact that though there are big temples in South India, but it is very clear that the temples have their own guidelines, own norms, and they have said that not more than 50 people can enter the temple at a time, and they have to wait outside in the queue. Yes. And also there is timing for the temples also from 7 to 2. And on the other hand, the hospitality industry is looking forward to resume its business. The hotels, the restaurant, they are making huge preparations. And as you know, Bangalore from the beginning, Karnataka from the beginning has been using technology to fight corona. And even now, the restaurants have used unique IT-driven methods to bring in customers, to serve the customers. There are contactless menus. There are technology-driven ways to enter the hotel, and also the fact that people have now realized that the safety lies in their hands. People know that now it is social distancing and mask, which is a key to their health, and also save themselves from COVID-19. So there is huge level of awareness among the people, and definitely when people venture out today, it will be a new beginning, a new experience. Though the parks Yes. opened last week, and also Yes, the Aisha. public transport services started, but still Okay. people look forward to a new beginning from tomorrow. Indeed. Let's go across to Shama and find out what the situation in Mumbai is like. Shama, I mean, Mumbai being the densely populated place that it is, people have to take further precautions. But I mean, we can't have everybody locked down forever. And this is the city that survives everything. So people, the maximum city has to return to its bustling best. How is it gearing up to do that? Well, here we are seeing that a balanced approach is being given to people of Mumbai and the state of Maharashtra. Now that the notification or the guidelines that had come from the center that religious places would start functioning from tomorrow, but the state government's guidelines or notification has not yet reached any of the religious places, boards, trustees, or anybody. So that means the religious places would not start functioning from tomorrow in the state of Maharashtra, but we can expect some or the other guidelines that could come in at the later stage. We are also seeing that from tomorrow onwards, under the program of Maharashtra Begin Again, the BEST buses in the city of Mumbai, which was used earlier only by the essential services employees or the workers, but now anybody having small businesses, including the plumbers, the shop owners, shopkeepers, the workers at shops, these people can travel by the BEST buses, but social distancing in these buses are also mandatory. Only 5 people would be allowed for a standing facility, because earlier we used to see lots of people. The entire Yes. bus was usually crowded, but it will not be the same scenario now. 2 days back, we also saw a lot of guidelines that had come, Okay. that markets and streets on the either side would be opening on alternate days. The shops Sure. would be functioning on alternate days. People now can go for jogs and runs, and likewise the employers, Yes. the teachers and the professors
would go to Yes, the Sharma, colleges we are running short of time, so I'd evaluate, like to not come the back for students. one final round with all of you, but we have to get Vishal in first. Vishal, so what is the situation like in Jaipur, and how well are people prepared for tomorrow? Well, a very good evening to you, Mark. When we talk about Jaipur, it's Rajasthan to be precise, Yes. and there have been 10,385 positive cases and 234 deaths have taken place. But the good thing is that the recovery rate is more than 73%, claims the Gehlot government, and which is pretty good. Now, when we talk about the unlocking things, Yes. the malls, the restaurants, they have been allowed also the clubs to function, obviously with strict guidelines of social distancing. For example, if you are going with your family to a restaurant, then the two tables should have a distance of 6 feet. But the religious places of worship have not been allowed so far. The Gehlot government, the chief minister had conference yesterday, a virtual conference, a video conference with the religious leaders, and it has been decided that a committee would be formed at the district level, headed by the district magistrate, and it would be decided at the district level as to how and when these religious places of worship should be allowed. So the doors are still closing, and we are waiting for the gods to appear from the closed doors, and hopefully, like other states, Rajasthan would also take the decision, and very soon the temples, mosques and churches would also be open for the public, obviously with strict guidelines. Right, a very quick roundup from all three of you, briefly, 30 seconds each. Aisha, starting with you. So what will you like to do tomorrow after unlocking? Is it going to be any different for you? Well, life goes on, Mark. We have been on field from day one, and it will be interesting to see how people will spend their weekends in the coming days, because malls will be opening, and Bangalore is a city, it's a cosmopolitan city. So we will have to see how people come out, and we will have to look at their experiences. So it will be very interesting. A new page in their lives, and also the fact that I would also like to go and see and experience the new dine-in experience in the restaurants, where they have made all arrangements, where they have made partitions between the tables, and as I said, technology-driven menus. So these are the things which are very new, and perhaps it will surprise us. But these are all safety measures. Right, indeed. So we're looking forward to hearing from you about that tomorrow. Shama, 30 seconds. What will you like to do tomorrow? It will be just a wait and watch policy with me. I'd like to stay at home, hope and pray that the situation gets better, because if tomorrow the entire city is planning to come out, then I better stay at my home and not bring the coronavirus inside the house. So I'd take all the precautions tomorrow. Okay, fair enough. And Vishal, since restaurants are opening in Jaipur, what would you like to be doing? Anchor ka audio chala gaya. Oh, it doesn't seem that Vishal doesn't seem to be able to hear us, but it looks like he did mention quite a lot in his first answer that can give us an impression of what he's likely to do. I'd like to thank all three of you, Aisha, Vishal and Shama, for joining us with those inputs. And with that, we conclude this program. Thank you very much for watching, where we've given you a live reporter's input about the situation in different parts of the country. Thanks for watching. Namaskar.